Okay, Pawan, so let's start thermodynamic snap for your GAIL and IOCL interview. You are getting shortlisted for these particular PSUs based on your Yes, sir. GATE's 2022 score. Yes, sir. So please tell me brief about your GATE score and in which year you have completed your B.Tech and why So actually I you have are done my interested in these PSUs. B.Tech in 2021 in mechanical engineering, and I have given the GATE exam in both year 2021 and 2022. This Mhm, year I have secured rank 108 with the score mhm, of 846 in mechanical engineering mhm. and rank 9 and GATE score of 886 in engineering science. Good. So why you want to join PSUs? So, uh, so because those Mhm, are those are the jobs and everyone admires. So mhm. this was my first priority when I was preparing for GATE. So you are in the same race, like everyone looking for PSU jobs. You also want PSU. That's why. Means if all सही the है. students will go for some kind of higher education abroad, you will also go for higher education abroad. No, sir. Actually, means I already wanted to join PSU before I Fine, was preparing for GATE. fine. So I think today you want thermodynamic snap. Yes, sir. Okay, so let's proceed in that direction only. Go on. So So what do before you like in? starting, Huh, sir, actually I am not very fluent in English. So in interview, can we use both language, English and Hindi, mix of both yes, language? बिल्कुल बिल्कुल. You can mix. Not an issue. This time Okay, sir. also, if you are more comfortable in Hindi, you can answer in Hindi, or you can mix Okay, the sir. languages, or you can answer in English also. It's totally up to you. One. Okay, sir. Okay, but in a continuous manner, systematic manner, you need to answer. Okay, Okay, sir. so can we start, Pawan? Yes, sir. Okay. तो मेरा पहला क्वेश्चन है पवन आपसे, what is thermodynamics? So thermodynamics means the study of temperature related systems in which temperature is in which generally temperature is expected to occur. Temperature is expected to occur. Means a body is at same temperature, you cannot carry out thermodynamic analysis. Uh, Actually means it is a study of a system which related to temperature, its energy and work. अच्छा क्या होता है? What is this temperature? So temperature in general way is average kinetic energy of all the molecules in the system. So temperature एक तरीके से सर उसको मेजर करने का तरीका होता है. टेम्परेचर उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है, तो उसको हम मेजर कर सकते हैं. जितनी ज्यादा उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी उस हिसाब से हम उसका टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा, जो कि डिफरेंट स्केल के थ्रू मेजर किया जा सकता है. अच्छा, can you tell me any thermodynamic process in which you are adding the heat but the temperature is decreasing? सर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस So tell me जिसमें more about this polytropic process. What is polytropic and why we actually सर consider this process in thermodynamics? Sir, if a system in which work and heat interaction both are going on, and in a particular situation when heat interaction is less than the work interaction, Mhm. even after giving the heat, its temperature will going to decrease. So suppose you are adding some X amount of heat. Yes, sir. So you are going to get some, 2x or 3x or some 1.5x times of the work. Means the work transfer is more than the heat transfer in a polytropic Ye- process. yes, sir. So it What means it is it means? सर What इसका मतलब वो एनर्जी अपना हीट एंड अपनी इंटरनल एनर्जी दोनों से ले रहा है. that is not a violation of second law of thermodynamics because you are नो getting सर. work more than the heat. नो सर. Why? बिकॉज इट मीन्स सर एक्चुअली इट इज मीन्स सिस्टम से जो एनर्जी साइक्लिक उसमें जो हीट गिवन हो रही है वो सिस्टम से इंटरनल एनर्जी के उसमें भी ले रहा है. सो मीन्स एनर्जी बैलेंस है एक तरीके से. नहीं, एनर्जी बैलेंस तो हर प्रोसेस में होता है, whether the process is reversible, irreversible. यस सर. सो अच्छा, can you draw a polytropic process with polytropic index -1 नो सर, आई एम नॉट एबल. on PV diagram? Please try. Don't try करो एक बार. Just draw the polytropic process on PV diagram with the polytropic index -1.
Sir, it will be hyperbolic. How you can say that? Sir, PV to the power minus 1 equals to constant, and then y is inversely proportional to x. X will inversely proportional to y, we can say. So it will be hyperbolic in nature. Are you sure x is inversely proportional to y? I think Sir, both are directly proportional. आपने -1 कहा था ना सर कांस्टेंट? हाँ, तो what you will get? You will get both are directly proportional. Yeah, inversely proportional. Inversely proportional. But PV I की think, power gamma equals. I think you are going to get the directly proportional. Why? Because PV की power -1 equal to constant. So can I write it as P equal to C by V की power -1? Directly proportional, sir. Sorry, sir. I was confused. I write it down +1. Both are directly proportional. Yes, sir. So now again you're going to say same thing. The curve is hyperbolic or any other? No, sir. It will going to look like a straight line. Straight line. So from where that line is going to pass? Sir, it will depend on the initial conditions, sir. After looking into that, y equal to mx plus c. What is c here? C will be the constant, sir. So how much c you are getting in this? So with some conditions, initial condition. The equation which we are having, P equal to C by V. Yes, sir. So for this equation, it will P start from the CV, origin. sorry, P equal to CV. Yes, sir. So the intercept is 0. Yes, sir. For this intercept will be at 0. So line is going to pass through the center only. Theoretically, it will pass through the center, but in practical scenario, it will going to start from some origin, some initial point. Why? No, 0 cannot be initial point. Because sir, it is absolute. It will be absolute pressure at absolute 0 at the origin, so it will not be possible for a system. We are drawing it as a PV diagram. So absolute 0 pressure is not possible. You have to say. It will be a perfect vacuum, sir, without any volume, without any pressure. So it will be not possible. No, sir. That is also similar to absolute 0 Kelvin. Absolute 0 Kelvin not possible. Absolute vacuum is not possible. Yes, but sir. There is no such law related to that. Absolute vacuum is impossible to achieve. Have you heard about something like this? Practically, if we ever try to achieve perfect, नहीं सर लॉ नहीं है, लेकिन कभी भी अगर परफेक्ट वैक्यूम अचीव करने का ट्राई करेंगे तो जो हमारा हीट ट्रांसफर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन होता है, तो कोई भी टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर होगा, वो रेडिएशन फेंकेगा, जिससे कि परफेक्ट वैक्यूम पॉसिबल नहीं होगा. तो परफेक्ट वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट 0 होना जरूरी है. So they are linked to each other. What is first law of thermodynamics? And just tell me some of the significance application of thermodynamics. So first law of thermodynamics is the conservation of energy, in which energy conserved. और सर इसके application of thermodynamics और first law. So किसके बताने हैं? Application. First you need to tell me what is first law of thermodynamics and first law of thermodynamics. Yes, application of thermodynamics. So first law of thermodynamics and conservation of energy. It means the energy neither be created and nor be destroyed. So thermodynamic की application actually जैसे boilers वगैरह होते हैं, इनमें use किया जाता है काफी. Heat engines हो गए, इसके लिए study करने के लिए use होता है. Suppose, Pawan, if you are having two gases in two separate chambers. Yes, sir. In a kind of same tank, but those chambers are created by attaching some kind of membrane or partition. Okay. Yes, sir. So now we are going to rupture that membrane or going to remove that partition. So the gases present in those two chambers, they are going to mix. So how you are going to write the energy balance in this case? So first I will write the energy for different gases. You need to highlight all those suitable assumptions, and based on that only you need to proceed. So पहले उन चैम्बर्स में मैं उनका टेम्परेचर मेजर करूंगा सर, क्या उनका टेम्परेचर कितना है, एंड देन मैं उनकी इंटरनल एनर्जी को मेजर करूंगा सेपरेटली कितनी है, एंड देन आफ्टर रप्चर जब सिस्टम अपनी इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा, दोनों प्रेशर एंड टेम्परेचर, एंड देन मैं उस कंप्लीट सिस्टम की एनर्जी को मेजर करूंगा थ्रू टेम्परेचर, एंड देन वो दोनों इक्वेट होनी चाहिए एज पर द फर्स्ट लॉ. So initial internal energy equal to final internal energy. Yes sir. ऐसा For this case. ऐसा क्यों? सर क्योंकि कोई भी वर्क एंड हीट जो इंटरेक्शन है वो हमने एज्यूम नहीं किया.
अगर हम दोनों को अपना एक सिस्टम के अंदर मान ले, दोनों गैसेस को, तो जो हमने कोई भी वर्क एंड हीट इंटरेक्शन उसमें अज्यूम नहीं किया, तो इस वजह से जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल के इक्वल होनी चाहिए। नहीं तो क्या एक्चुअल में कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा इसमें? सर अगर सिस्टम आइसोलेटेड है अदर सराउंडिंग से तो। So you are assuming there is no heat transfer, there is no work transfer. Then we can say initial internal energy equal to final internal energy. यस सर। तो क्या टेम्परेचर चेंज भी नहीं होगा, लाइक इफ यू आर कंसीडरिंग दोज गैसेस एज एन आइडियल गैस? सर बिटवीन जब रप्चर हुआ है उसके बीच में हो सकता है मे बी चेंज हो, जैसे कि उस फ्री एक्सपेंशन में होता है, सॉरी मेम्ब्रेन जब रप्चर होती है तो बीच बीच की जो पोजीशंस होती हैं उसमें जनरली टेम्परेचर कम या ज्यादा होता है, लेकिन जो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन होती है उसमें टेम्परेचर सेम हो जाता है। तो तो you are फाइनल इनिशियल thinking, कंडीशन में। you are considering it is like a case of free expansion, heat सो transfer फ्री zero work. एक्सपेंशन नहीं, बट इतना मतलब जनरली ये कह सकता हूँ कि इसका जो इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर होगा वो सेम होगा। बिटवीन द प्रोसेस इट मे चेंज। But I suppose if these gases are at different temperature, one is at 300 Kelvin, another one is at 350 Kelvin. ये The सर final temperature will बट be what? so final temperature we have to calculate through energy balance. Sir, I have considered the both gases into the my system, sir. Are at So my same system temperature. consider both the gases. Yes, sir. So first it will go into the thermal equilibrium. Just give me a second, Pawan. Yes, sir. Okay, Pawan. So, Pawan, just tell me the difference between isolated. You mentioned about that already, but I want to know something more about that. Isolated, insulated, और adiabatic में difference क्या है? Sir, isolated means कि हम कोई भी heat and work का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। Adiabatic स्पेशली कंसिडर्ड भी हीट, यानी कि हम कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच। एंड सर insulated is a similar to sir adiabatic, but means adiabatic similar to adiabatic. It will be sir. It will be similar to अच्छा, इनको adiabatic. एग्जांपल दे सकते हो आप? कैन गिव मी वन एग्जांपल ऑफ ईच, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड और ये जो एडियाबैटिक है? सर आइसोलेटेड कैन बी आइडियलाइज, बट मेरे को ऐसा नहीं लगता कि प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाता होगा, बट इट इज समथिंग लाइक आइडियलाइज कंडीशन। एंड सर आइडियाबैटिक भी परफेक्ट आइडियाबैटिक इज नॉट पॉसिबल, लाइक जैसे पर हमारे थर्मस होते हैं वो एक तरीके का आइडियाबैटिक सिस्टम हो सकता है, एंड सिमिलरली थर्मस हमारा आइसोलेटेड भी होता है क्योंकि कोई अच्छा, वर्क मेरे को इंटरेक्शन भी बताओ, नहीं जो होता हम है। थ्रोटलिंग है और फ्री एक्सपेंशन है उनको एडियाबैटिक मानते हैं, सो ऑन व्हाट बेसिस वी कैन अज्यूम थ्रोटलिंग एंड दिस फ्री एक्सपेंशन एज एडियाबैटिक प्रोसेस? सर उनका सराउंडिंग के साथ कोई भी हीट इंटरेक्शन नहीं होता है। नहीं, क्यों नहीं होता है? होता है एक्चुअल में। तो सपोज यू आर हैविंग ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, यस सर। यू आर हैविंग ए पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो क्या होगा नहीं उसमें कोई हेलो सर। ओके, ओके। नहीं, सपोज यू आर हैविंग ए थ्रोटलिंग डिवाइस, तो थ्रोटलिंग डिवाइस का यस सर। इंटरेक्शन तो होता है। वेयर वी यूज थ्रोटलिंग डिवाइस? So in refrigerations, generally in refrigerations. हाँ, तो क्या वहां पे उनको इंसुलेट करके रखते हैं? नो सर, एक्चुअली शायद वो बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, उनको टाइम नहीं मिल पाता सर हीट इंटरेक्शन का, मे बी इसलिए हम आइडियलाइज कर पाए एडियाबेटिक की तरह। थ्रोटलिंग फास्ट होता है? सर आई डोंट नो सर दैट। ठीक है। अच्छा, my last question is to you, Pawan. Pawan, you need to tell me something unique, something different about, or something from your own understanding, about the second law of thermodynamics. सर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के डिफरेंट स्टेटमेंट्स होते हैं। वन ऑफ माय फेवरेट इज द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो इसके साथ डिफरेंट स्टेटमेंट होते हैं जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्पेशल लॉ जो कि लॉ ऑफ नेचर नहीं है, इट वाज अ लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो इन दिस लॉ लाइक केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ये कहता है कि आप सिंगल रिजर्वर से कभी भी हीट को कभी भी वर्क नहीं बना सकते हैं,
क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है कि आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर में विदाउट वर्क हीट को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एंड द थर्ड स्टेटमेंट की एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। सो दिस इज द सेकंड। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी क्या होता है? व्हाट इज इरिवर्सिबिलिटी? सर इरिवर्सिबिलिटी जनरली सर ये होता है कि जब भी कोई प्रोसेस होती है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, अगर हम उस प्रोसेस को थ्रू उस प्रोसेस को वापस नहीं ला पाते हैं, वापस लाने में सर दो मेन फैक्टर होंगे इसमें कि हमें सिस्टम के साथ साथ सराउंडिंग भी वापस लानी पड़ती है ताकि कोई भी ट्रेस नहीं छूटे। अगर हम ओनली सिस्टम को वापस ला पाते हैं तो वो इंटरनली रिवर्सिबल होती है। एंड हम अगर दोनों स्टेट सराउंडिंग को वापस ला पाते हैं, वापस लाने से मतलब यानी कि हम बता नहीं सके कि ये प्रोसेस कभी हुई थी, तो हम उसको बोलेंगे कंप्लीटली रिवर्सिबल है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं किन्हीं रीजंस की वजह से, तो वो जनरली इरिवर्सिबिलिटीज होती हैं। अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, पवन। पवन, मान लीजिए आप यस सर। अपने रूम में, जिस द रूम इन विच यू आर सिटिंग, उसमें आप एक एलईडी बल्ब यूज कर रहे हो, मान लीजिए 5 वॉट का। यस सर। एक फैन यूज कर रहे हो 40 वॉट का। यस सर। कोई और भी है, कोई अप्लायंस जो आप कंटिन्यूसली यूज कर रहे हैं? इज देयर नो एनी सर। अदर अप्लायंस? चलो हम इन दो को मान के चलते हैं। तो मेरे को बताओ, व्हाट इज द रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी? अगर हम आपके रूम को एज ए क्लोज सिस्टम मान के चलते हैं, वी आर कंसीडरिंग योर रूम एज ए क्लोज सिस्टम, तो मेरे को रेट ऑफ रिवर्सिबिलिटी बताओ। सर रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी 40 प्लस 40 45 हो जाएगी सर, क्योंकि हमने दोनों जो प्योर वर्क था उसको हीट में कन्वर्ट कर दिया है। तो 45 हो जाएगी। प्लस इसके बाद हमें सर सराउंडिंग का टेम्परेचर देखना पड़ेगा कि जो 45 वॉट है इसमें से हम अभी कितना जो है वर्क में फिर दोबारा से वापस ला सकते हैं। इसके अलावा जो बचेगा सर वो हमारी टोटल इरिवर्सिबिलिटीज है। मतलब अगर हम रूम को एडियाबैटिक मानेंगे, देन इन दैट केस यू नीड टू टेक दैट। यस सर। ओके, ठीक है पवन, आई थिंक नाउ आई कैन प्रोवाइड यू द फीडबैक। Generally we keep these discussions in the limit of 10 to 15 minutes for the snap and 3-4 minutes for the discussion. I think you are appearing first time for the snap ना? यस सर। हाँ पवन, ठीक लग रहा है मेरे को आपका टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग। कुछ कुछ जगहों पे आपने थोड़ा सा मिस्टेक किया, वो मैं आपको डिस्कशन करके बताता हूँ। एक तो आप बहुत अच्छे से बता नहीं पाए कि थर्मोडायनामिक्स है क्या। यस तो सर। आपने सर टेम्परेचर नर्वस को, एक्चुअली मैं इंटरव्यू में हाँ सर नर्वस हो जाता हूँ बहुत जल्दी। हाँ, मतलब जो कोई बात नहीं। टेक्निकल क्वेश्चन नहीं होंगे। यस यस यस, कोई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रैक्टिस से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा यस सर। सोचना नहीं है और ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है कि मैं ऐसा हो जाता हूँ सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने पहले ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ, दैट्स व्हाई यू गॉट नर्वस। अभी प्रैक्टिस करोगे यस तो सर। यू विल फील कंफर्टेबल। ठीक है, कंफर्टेबल फील करोगे तो जो दिमाग में चलता है, जो आपने पढ़ा हुआ है, एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट बिकॉज यू स्कोर्ड वेरी वेल इन गेट एग्जामिनेशन, तो उसका कुछ रीजन रहा होगा, आपने जो उतना मेहनत किया है, तो चीजें आपको पता है। ओनली यू नीड टू प्रेजेंट दोस थिंग्स इन ए वेरी इफेक्टिव मैनर। ठीक है, तो वो कर पाओगे अगर आप प्रैक्टिस करोगे। तो ऐसा घबराना नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। ओके, इट नॉर्मली हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जितना धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू दैट। यस सर। तो टेम्परेचर फिर मैंने आपसे पूछा, देखो आपने वो एक लूज पॉइंट दे दिया कि टेम्परेचर होता है, और आप उसको बहुत अच्छे से बता भी नहीं पा रहे थे, तो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू सम क्वेश्चन फ्रॉम दैट। फिर आप उसमें फंस गए कि आपका जो टेम्परेचर है अगर सेम होगा तभी क्या हीट ट्रांसफर होगा। तो उसको क्लियरली बताना है, सो दैट बिकॉज देर आर इन इंटरव्यू देर आर हाई चांसेस वट एवर यू आर आंसरिंग द इंटरव्यू इज गोइंग टू आस्क यू फ्रॉम दैट। तो थोड़ा सा बहुत कॉन्फिडेंटली और सोच के आंसर करना है। दूसरा मैंने आपसे पूछा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, आपने बताया इट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज बैलेंस्ड, एंटायर एनर्जी क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। तो एक मैंने कहा कि आपके पास एक केस है, यू आर हैविंग ए कंटेनर चैम्बर जिसमें 2 पार्टीशन है, उसके लिए लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स या एनर्जी बैलेंस करके दिखाओ यूजिंग ऑल assumptions। तो पहले assumptions हाईलाइट करनी है आपको पंकज, मैंने आपको ओके बोला सर। भी, उसके बाद भी यू हैव नॉट हाईलाइटेड द assumptions। तो assumptions क्या बोल सकते हो कि सर मिक्सिंग, एक्चुअली मिक्सिंग और फ्री एक्सपेंशन जो होते हैं दीज आर वेरी फ्री, यू नो, फास्ट प्रोसेसेस, बहुत फास्ट होते हैं। इन दोज फास्ट प्रोसेसेस द टाइम टू ट्रांसफर द हीट इज वेरी लेस, सो वी कैन एज्यूम मिक्सिंग एंड फ्री एक्सपेंशन एज ए एडियाबैटिक प्रोसेस, ऐसा यस बोलना सर। है। थ्रोटलिंग को एडियाबैटिक क्यों बोलते हैं? थ्रोटलिंग फास्ट प्रोसेस नहीं होता, बट थ्रोटलिंग जो डिवाइस होती है उसका जो एरिया होता है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, लाइक कैपिलरी ट्यूब सही या है। एक्सपेंशन वॉल्व। तो उनका एरिया क्या होता है? स्मॉल होता है। एरिया स्मॉल होने से हीट ट्रांसफर विल बी नेग्लिजिबल, बहुत कम होगा। रिगार्डिंग, यस सर। बट थ्रोटलिंग फास्ट नहीं होता। लाइक सपोज यू, इफ यू ओपन ए टैप, कंटिन्यूअस होगा। टैब को अगर ओपन पार्शली ओपन करोगे तो वाटर विल कम आउट थ्रू दैट टैब इन ए वेरी स्लो मैनर, फास्ट नहीं आएगा।
तो प्रोसेस स्लो होता है बट द एरिया इज वेरी स्मॉल। आइसोलेटेड मतलब देयर इज नो एनर्जी इंटरेक्शन ऑफ द सिस्टम विद द सराउंडिंग, नो हीट ट्रांसफर, नो मास ट्रांसफर, नो वर्क ट्रांसफर। तो कोई भी एनर्जी इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज एनर्जी इंटरेक्शन सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कैसे हो सकता है, या तो मास की फॉर्म में, या हीट के फॉर्म में, या वर्क की फॉर्म में। मास ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, वर्क ट्रांसफर, ऑल थ्री आर काइंड ऑफ बाउंड्रीज फिनोमिना। मास अंदर भी हो सकता है बट हीट और वर्क क्या है, हीट एंड वर्क आर बाउंड्रीज फिनोमिना, जिनको बाउंड्रीज पे देख सकते हो। इंसुलेटेड का मतलब है हीट ट्रांसफर रेस्ट्रिक्टेड। ये नहीं बोल सकते आपकी इंसुलेटेड एडियाबैटिक बोथ आर सेम। इंसुलेटेड का मतलब क्या होता है, आपने हीट ट्रांसफर को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बट हीट ट्रांसफर इज नॉट जीरो। एडियाबैटिक मींस कि सर theoretically we can say कि the system is insulated with some kind of perfect insulation and we can assume there is no heat transfer, and you can mention then those three cases like perfectly insulated, process is very fast, या area is very small। या तो perfectly insulate कर दिया आपने, या area बहुत कम हो, या process बहुत fast हो। in these three cases we can assume process as a adiabatic process। तो उसको थोड़ा सा क्लियरली बताना है, कॉन्फिडेंटली क्लियरली बताना है। अच्छा, इरिवर्सिबिलिटी आपने ठीक बताया। रिवर्सिबिलिटी इज नथिंग बट लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, लॉस ऑफ अवेलेबल वर्क। तो अगर आप एक 40 वाट का फैन और 5 वाट का ट्यूब यूज करें तो फाइनली एक्चुअली व्हाटएवर एनर्जी वी आर गिविंग दैट इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन, डेड स्टेट। तो उसका एक्सर्जी जीरो होगा। तो अभी एक्सर्जी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर इन्वेस्टिंग 45 वाट्स ऑफ द एक्सर्जी, बट फाइनल एंटायर एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू हीट एंड दैट इज गोइंग टू द डेड स्टेट। तो उसका एक्सर्जी क्या है, जीरो। सो द रेट ऑफ इरिवर्सिबिलिटी विल बी 45 वाट्स ओनली। बाकी ठीक था, आपने सेकंड लो तो ठीक बताया। थोड़ा सा नर्वस आप लग रहे थे, उस पर काम करना है। और बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चंस मैंने आपसे आज पूछे। नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू विल जॉइन आई विल आस्क यू सम मोर टेक्निकल क्वेश्चंस, ठीक है? तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पे काम करना है, क्लियरिटी के साथ बताना है। और मेरे को लग रहा है कि आप में देयर इज यू नो यू आर लुकिंग लाइक ए वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, और आप मेहनत करोगे और श्योरली विद इन नेक्स्ट 2-3 इंटरेक्शंस आप बहुत अच्छे से डेवलप कर पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे, ठीक है?